So, hello everyone. Welcome to another session of the Global Pakistan Tech Summit. Today is day 29th of the summit, and we have reached so far more than 200,000 people, more than 100,000 views. It has more than 250 speakers, out of which 50% plus are women leaders. So, my name is Arzish. I represent Startup Grind in Pakistan, and I run Ejad Labs. We help build the startup and tech ecosystem through events, conferences, IT, trade delegations. And today's session is particularly important to me because we have some fantastic speakers and we're going to have a very insightful conversation about the future of Pakistan and the role of technology. So let me just give you brief introductions. So we have Faisal Sabzwari. A lot of you might know him already since he's a very famous personality, uh, he's a young politician. He has been the Minister for Youth Affairs twice and has launched very large scale projects for public benefit. He has done his education in economics and worked in chartered accounting firms in Pakistan and in Middle East. He was recently nominated as the convener of the advisory committee for Minister of IT and Telecom and has been engaged in bridging the gap between industry and government stakeholders like this session where we are bringing industry and him as well. Thank you, Faisal, for joining us. Thank you very much, Arzish, for your kind words. And I'm glad that I'm part of your this very important project for Pakistan, projecting Pakistan. Thank you so much. Thank you so much. So up next we have Mujeeb Zahur, who is leading the S&P Global Operations in Pakistan, the Philippines, Argentina. We recently hosted a fireside chat with him as well. He's also the vice chairman of Pasha. So he'll be going to represent not just S&P but the whole industry, I think, today. And he also serves on the executive committee of the U.S. Pakistan Women Council, which is a State Department initiative aimed at supporting women and empowering entrepreneurs. So thank you, Mujeeb. Mujeeb, you are muted. Yep, pleasure to be here. Thank you, Arzish. So next we have my dear friend and someone who has helped make this session and possible and helped in the summit a lot as well. So Haris Shamsi. He has more than 20 years of experience in IT, in telecom. He returned to Pakistan in 2016 and was the chief digital officer at Inbox. But recently he has started two of his own startups or ventures called Yottabyte and Clypeus, where he is working on solving key local and global problems with the help of high technology. So his goal is currently to make Pakistan the go-to IT outsourcing hub for the world. So thank you, Haris. Thank you, Arzish. Thank you for inviting me. So let me just start with the first question as well. So the way we'll go is like I'll alternate between asking questions to each of you, and maybe we can take 3-4 minutes in answering each of the questions. So the first one is the two facets of how are you feeling post Corona? So we understand that you and your family have mashallah recovered from the virus, which is amazing. Well, thank you, Arvish. Frankly speaking, that was quite an experience because everyone was hearing and everyone was fearing about Corona. But once you experience it, then you come to know that what are the challenges one faces. By the grace of God, my entire family has recovered. We didn't have the severe virus infection, and Alhamdulillah, we are doing fine. And during those days when everyone is supposed to be ideally quarantined, since each and every family member was infected, so we are in a large quarantine house. So so you get time to bond again. You get time to introspect. You get time to read. So I divided my time apart from those moments where I was feeling very very weak and could not be. I wasn't able to read or watch television or go through my WhatsApp messages, etc. But apart from that, it went well. All is well that ends well. Absolutely, absolutely, and thank you so much for being so energetic. Even just you just recovered from this and joining. So I'll start with another industry relevant question to you. Since your appointment at the ministry,
the COVID situation started, and you haven't been able to. Obviously, no one has been able to travel much, and maybe come to Islamabad. So maybe if you can talk about what are some of your short-term, medium-term, and long-term goals that you have with this role, and especially for the IT ministry. Arzish, again, it is very unfortunate for me that since that appointment, I was able to travel to Islamabad first because of that COVID thing. There were no domestic flights available even here, and people were skeptical, and even domestic travel was being discouraged. So, being a law-abiding and rules-abiding citizen, I obeyed the rules, and unfortunately, I got infected a month ago. So I didn't have much chance to interact with the people out there in Islamabad who are uh, shaping the IT prospects or the policies of government of Pakistan. But still, there are a few things which have been in my mind because my party is having the portfolio of IT ministry since a couple of years now, and being one of the few people who are engaged in the policy making of the entire party. So I'd been thinking in this particular respect. First of all, coming to the short-term thing, because now the entire economy, now the entire technology is, yeah, we are now living in the post-corona world. So Yeah. everything is now to be seen with the perspective of post-corona world. So what is there for technology in the post-corona world for Pakistan or for the government of Pakistan? So I believe this is much greater a chance for the government of Pakistan, for us, uh, like now the students of middle class background or elite or people who have resources with them, they are studying through online classes. But what about millions and millions of those who don't have the luxury of having a tablet or having a laptop? And even if they have a smartphone with them, thanks to the cheaper models available, they don't have the connectivity. So the first issue in Pakistan, which is needed to be dealt according to in that post-corona world, I believe is the connectivity. We have seen protests in Quetta by these students. They were saying that we don't have resources. Now, this is the job of any government to facilitate people, their own people. Uh, we call them youth dividend. We have 65% population, which is below 35 years of age. Okay, fine. Now, what are we going to do with them? We need to facilitate them. Uh, we cannot afford to have them in classroom again uh, until unless all the SOPs are properly implemented. There is a vaccine, there is a testing procedure, and etc. etc. We know that about the limited resources of Pakistan. So what can be done? Yes, they need to be taught remotely. So there's no break, there's no gap for their studies. But apart from the gadgets, they don't have the connectivity. Most of the Pakistan does not enjoy even 4G. So here comes the role of IT and telecom, that we need to sit down with all the major players to provide each and every corner of Pakistan. Yes, Pakistan has its own security issues. I'm sitting in Karachi right now. This very morning, we witnessed a major terror plan, but thanks to the proactive approach of our police, thanks to their bravery, uh, uh, Pakistan Stock Exchange did not face the kind of damage terrorists wanted. So yes, Pakistan has issues. We have border areas where providing 4G or that kind of connectivity could be an issue. But there are countries in the world uh, which have similar issues at their borders in their different regions. Still, they are coping up. So we need to come up with some out-of-the-box solutions for that. So for short term, there are two things which comes to my mind. First of all, giving the entire population the kind of connectivity which enables them
to run their each and day-to-day affairs without having much physical interaction. Secondly, digital economy is again an aspect which comes to our mind in the post-COVID thing. Only around 25% have the availability of the accounts with them, and very, very less section of the economy is being engaged in that digitalization. So here is a huge segment which can be facilitated through government. How? Certainly, I can share with my point of view and the expertise of Haris and Mujeeb and yourself. Certainly, you guys can add on. But these are the two things which comes to my mind when we talk about the short-term goals in a post-corona Pakistan. Bilkul, again, and thank you so much for highlighting these issues. Do you think, I think two of us are in Islamabad, three of us, and we're in Karachi. So 3G and 4G doesn't seem like a facility, right? It's the go-to thing to be har jagah available to someone in maybe Gilgit or like Swat or somewhere far. That might be a big challenge, and definitely that's one thing that we collectively need to solve, right? Because the more people that get on the internet, that supports the knowledge economy as well. So my next question would be for Mujeeb, and this is somewhat related as well. Mujeeb, what are some of the key hurdles that you see in the growth of the IT industry, right? As you have a lot of experience at FMP, but also currently representing Pasha as well. And we don't just want to talk about the hurdles. So what are the key hurdles and how can we solve them? Yeah, that's a thank you, Arzish. That's literally a $5 billion question, right? That's the potential of the IT exports by a lot of measurements. So I'll try to be concise and share some views around based on the recommendations that Pasha has been given to the government in the past, as well as in the more recent past, as well as before that. I think when it comes to, and I'll talk about those, and I think they will basically, the suggestions, I rather not dwell on कि जी क्या नहीं हो रहा. I'll rather give the suggestions, and that will identify the gaps automatically as well. So our broad suggestions have been for increasing the IT exports, especially from products and services sector. Currently, depending on whose number you go with, as I shared, I think in our last talk as well, the official reported number is just above $2 billion. If you add freelancers, it reaches somewhere near $5 billion. We all feel that the potential is significantly higher than that. उस potential को realize करने के लिए, we said that three things are absolutely important. The first initiative is what we call Make in Pakistan. What that basically warrants is, or demands is, that the government introduces whatever contracts that the government lays out, preference should be given to local companies, local expertise in fulfilling those contracts and those jobs. Again, this is a model. It's not unique to us, as I've talked about in other platforms as well. We don't need to really reinvent the wheel to solve our problems. These problems have been solved by multiple countries multiple times. More recently in Eastern Europe, countries like Lithuania, Poland, Philippines before that, India even before that. The fundamental stimulus comes from the government already does a lot of projects which are, where private sector IT companies are not considered local companies. That's an initiative which we feel it's a gap, and this initiative will help fulfilling that gap. It will give our entrepreneurs, it will give our local businessmen in the IT sector the opportunity to work on projects that will it's not only about revenue. The longer term implication there is, it will give them the ability to build a strong portfolio. अभी अगर एक IT company, let's say government of Uganda के किसी project पे bid करती है,
तो गवर्नमेंट ऑफ युगांडा पहला सवाल ये पूछेगी कि अगर आपका इतना अच्छा प्रोजेक्ट था तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपसे क्यों नहीं कराया, उन्होंने तो फलानी कंपनी से करा लिया है जो बाहर की है। तो ये आई थिंक दैट नैरेटिव इज इम्पोर्टेंट. The second thing that we've asked for, again, at the policy strategic level, is the development of special technology zones. Again, this is not something that is unique to Pakistan. It is something that exists in all major tech exporting countries around the world. And again, this is all it requires is not a ton of investment from, just like the first suggestion, उसमें कोई government की अपनी investment as such involved नहीं है. स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स में भी कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है. हमारा कतन ये पर्सपेक्टिव नहीं है that the government makes buildings for the technology sector. What we want, or what we're asking for, is a framework of technology zones. It is available already, again, in India, in the Philippines, in Lithuania, and the other countries that I spoke about. And what that framework does is it ensures availability of technology-enabled infrastructure for companies where they can go in and start their operations or expand their operations very, very quickly at affordable, competitive rates. A couple of examples that I can give, as you mentioned, I look after S&P Global's operations in the Philippines. We have about 800-900 people there, and their BPO or IT export sector does about anywhere between $60 to $80 billion. That entire sector has grown. One key factor there is that the process of going to find the infrastructure, which is space, good internet connectivity, uninterrupted power supply, etc., is ease of commute for employees so that they can reach those particular premises. All of that is available under one sort of a one window operation. It's called PEZA, the Philippines Export Zone Authority. And you sort of don't have to deal. आपने FBR से deal नहीं करना, आपने EOBI से अलग deal नहीं करना, आपने कोई 23 ये हमने count किए हुए हैं. An IT company potentially has to serve 23 stakeholders right now. 23. इसमें बहुत सारे PTA शामिल है, बहुत सारे और लोग शामिल है. ये आपको नहीं करना पड़ता. So, a large global entity like ours is always, it's easier for us to operate in a country where we don't have to deal with such overheads. Space की मैं आपको again और examples छोड़ दें, मैं अपनी example दे देता हूँ. फिलिप मैंने शायद पहले भी ये जिक्र किया था in a different, so जो repeat हमारे attendees हैं, apologies to those guys. लेकिन we were able to find almost 80,000 square foot of space in the Philippines in like 2 weeks. In Pakistan, we've been looking for the last almost 3 years, and we haven't been able to find anything that fits our bill and is competitive enough to where it becomes a no-brainer for us to really do. So, special economic zones is a second strategic initiative which is lacking right now, and we feel strongly that needs to be done. Lastly, the third most important thing, and again, the need for it comes right now. Pakistan is not on the map of as a technology destination or a technology service or product destination. Uski wajah ye hai that when the likes of Gartner or McKinsey, they publish a report on the destinations around the world, we're not included in it because we've never engaged with such partners. These are globally established bodies that publish these reports regularly. So our ask is, okay, we engage one such body. We can run it through a competitive process under PPRA rules and all, and engage the body to conduct a study. It gives details around कि हमारा product size क्या है, हमारी capabilities क्या हैं. ये data fragments में available है, एक जगह पे available नहीं. और उसका दूसरा फायदा ये होगा
कि we will be in the list of countries. उन countries में श्रीलंका भी है आज, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान नहीं है. गार्डनर की रिपोर्ट अगर आप उठाएं तो उसमें हम एक एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं हैं. हम अगर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, so let's say in the interest of time I won't give an example. मैंने last time वो example दी थी of how this actually translates, because typically such bodies will also will also result in active opportunities coming our way. They will give us the ability to project our capabilities, to project our skills to specific opportunities, and that's going to be super important. So these three things: make in Pakistan, special economic zones, and engagement of sort of marketing for the technology capabilities for Pakistan. बिल्कुल अगेन एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस पॉइंट. आई रिमेंबर कि लास्ट कॉल में भी हमने काफी ये कवर किया था. And to add to your point about $5 billion, I personally think that the opportunity is much more than that. So if you produce 1 million people in the next 10 years who earn $20,000 and then $20,000 to Pakistan, right? That's $20 billion a year. और ये कुछ शायद इतना बड़ा टारगेट नहीं है. If you look at Tata Consultancy, which is just one of the Indian companies. So they have a revenue of $20 billion and around 0.4 million employees, right? So that's just one company in India, and if we do it like in the whole nation, that will not just solve our trade deficit, जो कि शायद 20 billion के around ही है, but also uplift the economy in the long run. And with this, Haris, my next question would be to you, given your insights and focus on helping rebuild Pakistan. How can technology play a role in the growth of the economy? And especially, what is the significance of this knowledge economy for our country? Thank you, Arzish. I think I'll just build upon what Mujeeb was mentioning. And if you compare, let's say, look at the GDP, for example, कितना हमने किया है? 320 billion last year, right? And if for that matter, if we agree that this is $5 billion IT, we are not even 3% contributing, less than that, right? And I think the potential is humongous, because if you see the neighboring country, for example, and they've been doing it for the longest time, the framework which Mujeeb has been talking about and all that, they're contributing to their GDP more than 9%, right? And the only thing which we have is the human capital, right? We have lost a train for agriculture, for industrialization, and so on and so forth. And I think it's important for us to you mentioned the knowledge economy, right? And you have been given some numbers. मैं आपको बहुत छोटी सी examples देता हूँ. January I have started this work, and I have been able to place 12 people, and every one of them is at a minimum $1,000, right? So if you just take example, you are talking about million, I'm talking about 100,000 only, right? 100,000 with 1,000 a month, right? This makes 1 billion a year, right? Coming in, and let's just keep multiplying this, right? One of the most important things to build this knowledge economy and to have some contribution coming from IT is, Mujeeb has mentioned 3 things. I would just add one is nurturing your human capital. That's the most important thing, right? And because I deal with some of the foreign clients, and I've been part of in my previous job, I was part of working for a proposal of an academy. I can see and I can relate to it that what kind of impediments are there in Pakistan, other than the basic connectivity issue, for example, as Faisal was mentioning, right? But if we are able to solve the connectivity problem, create some specific zones to facilitate the software and export companies, and build the brand Pakistan outside Pakistan, the human skill set which we need to nurture is the most important thing as well from this. If we are able to do all this, I think 20 billion is nothing, right? If you talk about Vietnam is what, 261 billion dollars. Their aggregated services, contribution to it is 41%, out of which I think 17% is now IT only, right? And they started long after that.
after us, right? So I think it's more about the focus approach, and the more you invest in the knowledge economy, the more you invest on your human capital. फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि जब आप बाहर बात करने जाते हैं, यू हैव एक्सेलेंट कोडर्स, you have excellent developers, right? And I have recently signed up one of the companies locally for an outside project, and brilliant, amazing talent in Pakistan. What we lack communication, right? We lack business writing skills. We lack framework of software development because we code very well, right? But then again, we don't follow certain processes, and for that, very specific, to the point, 6 months, 3 months courses are required for our talent to be able to contribute heavily outside, right? And clubbed with that, if you are able to create this brand Pakistan image outside, right? The trade shows and all that. Unfortunately, since 2016, I've been looking at some of the delegations which are going out, except few. One was yours, PakTech US Exchange Program, where I've seen some 100 plus people gathering from the valley itself. Most of the delegations and most of the trade programs, they are not giving the right results. Why? Because they are not focusing on these specific areas, right? I'll be very blunt. 10 दिन के ट्रिप पे जाते हैं तो 6 दिन तो घुगने पिंडे में लगा रहे होते हैं, 4 दिन शायद जो है वो हम बता रहे होते हैं कि जी what is Pakistan all about, right? So we need to also invest in ourselves, in our human resources, to be able to contribute to this knowledge economy. और इसके अलावा कोई चीज है नहीं पाकिस्तान के पास. This is what I feel. We have population size, huge population coming in, and small degree program भी ना करें, ठीक है, बूट कैंप्स करें, फोकस प्रोग्राम्स करें, ठीक है. अब ना गूगल, ना फेसबुक, ना माइक्रोसॉफ्ट, nobody hires engineering bachelors or CS graduates and so on. They're very focused. आपको specific area में काम करना है, you contribute to that area, you need to have the right skill set. एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना हमारे पास, तो ये है कि if you compare to Philippines and Vietnam or Korea, right? We have good English communication skills. And you'll be surprised. This is what people say, that compared to our neighboring countries in Far East and so on and so forth, right? Pakistan, they have good business communication skills. Whatever segment we have, right? Small segment, right? Because our accent is more, they can comprehend and understand and so on and so forth. So ये छोटी छोटी चीजें अगर हम nurture करें अपनी community के अंदर, और backing by the government boot camps enable करे, government cohesive environment create करे, ठीक है, government ease of doing business की तरफ थोड़ा सा जाए. जैसे मुजीब ने भी कहा 23 stakeholders हैं, ठीक है. अब EOBI, मुझे EOBI देने में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. EOBI इज पर एम्प्लॉई मेरा ख्याल है 350 रुपए, ठीक है. बट मेरा फियर है कि वो जो इंस्पेक्टर जो आता है सोशल सिक्योरिटी का, जो आगे मेरे ऑफिस के सामने खड़ा हो जाता है और मुझसे पूछता है सुबह शाम के यार कितने एम्प्लॉइज हैं, पर एम्प्लॉय दे रहे नहीं दे रहे, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, दैट टाइम वेस्टेज इज इट्स अ बर्डन. एंड बल्कि प्रीवियस जो मिनिस्टर साहब थे उनके साथ जो कमेटी काम कर रही थी, उसमें बहुत सारी हमने सजेशन एडवाइसेस भी दी थी. उसमें ये भी एक थी कि आईटी कंपनीज को जो है वो सोशल सिक्योरिटी और यूबीआई एंड सो ऑन सो फोर्थ थोड़ा सा बाहर रखे हैं. अभी ग्रोइंग इकोनॉमी हमारा ग्रोइंग सेक्टर है एंड सो ऑन सो फोर्थ. प्लस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड दें इसको, इंडस्ट्री रिकग्निशन दें. इट्स अ बिग ह्यूज इंडस्ट्री. $5 बिलियन भी अगर कर रही है, ठीक है, बहुत सारा अनअकाउंटेड भी आता है इसके अंदर, बट देन अगेन इट्स अ ह्यूज सेक्टर. मुझे थोड़ा सा जो प्रॉब्लम नजर आया अभी तक वो ये है कि आई थिंक अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड सो ऑन, आई थिंक फोकस नहीं है इस सेक्टर के ऊपर, ठीक है. $2 बिलियन की कमिटमेंट थी गवर्नमेंट की तरफ से कि इस सेक्टर के ऊपर रखी जाएगी फॉर द पीरियड ऑफ 5 years. ठीक है, और भी चैलेंजेस हैं, बट to overcome those challenges, to economy challenges जो हैं, बाकी सारी चीजें, I think we need to focus on this area. और बहुत important रोल है नॉलेज इकोनॉमी और हमारे टैलेंट का पाकिस्तान के जीडीपी कंट्रीब्यूशन. जी बिल्कुल. आप दोनों ने जो चीजें मेंशन की, मैं आई थिंक उसी से फैसल पे अब सवाल पूछ लूंगा कि एक तो हम ब्रांड पाकिस्तान की बात करें, क्या प्रमोशन होनी चाहिए. दूसरा एक ऑब्वियसली आई थिंक वी ऑल एग्री कि शायद हमारे
टैलेंट की जो प्रोजेक्शन है दुनिया में वो उतनी अच्छी नहीं है। तो इंडिविजुअली हम सारों को तो बहुत पता है क्या टैलेंट अच्छा है, दुनिया को नहीं पता और उन्हें बताना है। तो फैसल, द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू वुड बी कि so far we've been unable to project our talent to the outside world in the right way. What measures do you think are required to take or make brand Pakistan bigger and better globally? Yeah, whatever Haris and Mujeeb said, of course, I'm in agreement with them. And at times, still I'm an outsider, although I had to come to Islamabad and try to advise a few things with the help of friends like you in the IT industry. But I fail to understand that these are very simple things. These are very obvious things, which Mujeeb was saying. 23 stakeholders, or Haris was suggesting that just reduce the role of EOBI and etc. for IT industry. And uh, why uh, why are we still waiting for those things? I wonder. Secondly, what can be done? I believe that there has to be a specific fund with the IT ministry for creating that brand Pakistan. In order, we have seen that if you issue some bonds, you create road shows uh, for the diaspora in different countries. Why cannot we have road shows for our IT industry outside? We have success models, we have success stories here. But as Mujib was saying, that government of Uganda is going to ask that what have you done for government of Pakistan? Secondly, I believe that there has to be some national sort of learning platform for the IT thing. There are universities, there are tech centers, there are diplomas. Uh, is there some sort of uniformity? Is there some sort of an oversight that what is being taught? So in order to market it abroad, you need to have a command on certain standards. There has to be certain standards for IT education. The government of Pakistan can develop, or you don't need to reinvent the wheel. अगर दुनिया में कहीं और हो रहा है, so we can certainly take it from there. और हम इसको standardize करके अपनी चीजों के we can certainly market. हम अपनी population को जितनी youngsters हैं, when we talk about skill development, we don't talk about the IT skill. IT as a skill. IT needs to be considered as a skill in the modern world. हम आज भी in fact budget मैं देख रहा था पास हो रहा था, and honorable ministers were suggesting that we need to focus more and more on agriculture. Certainly, but there is a limit to the exports of cotton which one can perceive, but there's no limit to IT exports. So you need to understand that what needs to be prioritized. To me, as a continuation of the answer to your first question, that what are the short-term or long-term, certainly there are legislative issues in Pakistan. We have data related issues, data security issues, which are very delicate, but they need to be tackled. We need to give confidence to international players. Uh, uh, some piece of legislation which is not even tabled before the House, and if it is going to direct Facebook or Google that you need to come to our terms, I'm sorry, they are not going to do that, and they said it very openly. So पहले तोलो और फिर बोलो वाला काम जो है, we need to do it. It is far more important to create an image of Pakistan in the field of IT and telecom, which is consistent to international practices, consistent to international standards, and which is far more inclusive, which creates a conducive environment so international players can come here without having the fear of an overnight legislation which can harm their business interests. एब्सोल्युटली, एंड थैंक यू सो मच कि आपने वो कॉटन वाला पॉइंट शेयर किया। तो ये आईटी इंडस्ट्री वाले तो ये लफ्ज बड़ी देर से बोलते रहे, और आप जैसा कोई बंदा बोले तो हमें बड़ी खुशी होती है। वी फाइनली हैव सम
someone very strong stakeholder in the government who actually understands the potential of IT. I think इसी पे मैं मुजीब से अपना अगला सवाल कर लूँगा कि मुजीब, you've been a veteran of the BPO industry, so if we take this, this sub industry of the IT sector for a very long time, you worked, I think 19 years in this industry. So आपको क्या लगता है कि कहाँ पर जो पाकिस्तान की BPO industry है that actually lost the competitive advantage, and what measures can be done to uh, maybe not win the race, but actually get in the race and get a bigger chunk of the pie for the global industry. Gee, yeah. Uh, Thanks, Arzish. I think first of all, I think as Haris very rightly said, our advantage is, and we're always able to compete very effectively whenever there is work that has to be outsourced or looked at to be done in a different country, which involves languages, because of our inherent ability to have better English language speaking skills. Our accents are a lot more neutral as compared to the usual destinations, whether they're in Asia like India or Philippines, or whether they are in Eastern Europe. तो वो हमारा एक एडवांटेज रहा है जिसको हमने बहुत जगहों पे मोनेटाइज किया है. We have success stories like PRG, who's growing and expanding even in this particular time, which is difficult for other countries. We have examples like Stuart, ourselves, other large entities. MTBC is another example of a large company that has presence in Pakistan. अब जब हर्डल्स की आप बात करते हैं, मेरे ख्याल में कुछ हर्डल्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली शायद इंडस्ट्री से नहीं है, बट that sort of the things that I spoke about adds on to it. I'll give you an example. So Pakistan's perception and the security issues from 2008 maybe onwards, they absolutely are a deterrent. When typically when clients are looking to outsource, they would want to go on site and do trainings. So if it's difficult for the client to visit because of security situations to Karachi, Lahore, or Islamabad, it's going to be a problem, right? So, I mean, and small those, I don't think that those are not sort of that require a separate panel discussion. That will perhaps Faisal bhai to us panel mein bhi ho sakte hain. हमारी शायद उस panel में जगह नहीं बनेगी उस तरह की conversation के लिए. लेकिन I mean the what we can do to offset that is, if we, and that's what as I shared earlier, what we've tried to really push for is make it so convenient and easy that if and when someone decides to visit and come over, they don't have to face any other challenges. Unfortunately, हमारे लिए वो भी थोड़ा hurdle रहा है. Over the last 3 years, it has become a little easier since we've done online visas, visa on arrival for a lot of countries. So that has been helpful. But in the past, that was also an issue. I was told, in my previous life from clients that, I can get visa on arrival in the Philippines. India gives me a 10-year multiple visa. Pakistan, I have to block my passport for like 4 weeks. Then they give me a 3-month single entry visa. Why would I do this? I would just, go somewhere where it's convenient. और दूसरा जो मैंने पहले बात की, which is a hurdle right now, especially for the BPO sector, because of competition out there. A country that is offering 5-day processing time to set up, your entire process, whereas in our case it might take longer. Recent example मैं आपको दे देता हूँ that we are fighting as we speak is requirements from a regulator, PTA, that started off when this pandemic started. They came up and said कि जी आप अपने IP whitelist कराएं. We pushed back again. There were people, especially in the cybersecurity area at PTA, that was super helpful. I can't thank them enough that they were flexible. They offered us. They've been very, very responsive. However, so in their own right, they're not the ones who came up with the thing that we should do this.
somebody asked them कि भाई ये आपने implement करना है. In that implementation, they've been very, very helpful. Our argument is कि जी आप ये क्यों कर रहे हैं अभी? You know, we moved a request through the Ministry of IT, I think day before yesterday, to defer this for 3 months. हमने तो कहा था इसको defer करें आप 6 महीने के लिए जब तक ये pandemic खत्म नहीं होता. तो BPOs affect हो रहे हैं उससे. I know of BPOs that had to shut down because of IP whitelisting. वो नहीं करा सके. छोटी कंपनी है 15-20 लोगों की, उनका पहले ही हालात मुश्किल में है. वो किस तरीके से ये ओवरहेड बर्दाश्त करेंगे? तो we have absolutely no qualms, and this is what we told PTA as well from the Pasha platform. We are absolutely in favor and strongly support any kind of strategy or measure to provide security and data protection, all of that. लेकिन उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप ओवरहेड्स प्रोवाइड कर दें. Just give me 1 second. My AirPod. Yeah, you're muted. Okay, can you hear me now? Absolutely. Yep. Okay, so just to finish off what I was saying in terms of hurdles, I think that just adds to the complexity when you look at it in that regional context. इस तरह के मसले जो शायद अगर बाकी चीजें ना होती तो ये कंप्लायंस की चीजें और जगहों पर भी होती हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर वो वाले प्रॉब्लम्स नहीं है इसीलिए हमें इस तरह के चैलेंजेस नहीं आते. एक और जो हम बहुत ज्यादा पुश करते हैं गवर्नमेंट के साथ again it's not a new solution. We've seen countries come up really strongly that have gotten extraordinary support from the government, where senior members of the government take interest firsthand and meet with potential clients. I had shared an example from Lithuania in the previous panel discussion, where their prime minister went and met with the Lufthansa decision makers that were there evaluating Lithuania as a destination for their 2,000 people staff, right? So that act sort of offset Philippines and in India, even though Lithuania had maybe they scored lower in terms of having a large industry, but they scored really high because the decision makers at Lufthansa felt यार ये जबरदस्त जगह है, यहाँ पे तो senior stakeholders के साथ access है मेरा. तो हमें वो है तो इंडियन फिल्म का डायलॉग वो कहता है ना कि जी मेरे पास दौलत है, मेरे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है. तो हमारे पास माँ भी नहीं है. Unfortunately we face that problem as well. तो I think that ये चीजें अगर बेहतर कर ली जाएं तो as we've seen examples, as Haris said, when our people have gone out and looked for opportunities, 5 times out of 8 or 9 we win those opportunities when we put head to head. It's a matter of getting us in the list. Once we're in the list, we will win more opportunities than not. Absolutely. And again, thank you so much for highlighting these issues. एक जो step मैंने अपनी capacity में छोटा सा लिया कि because we interact with a lot of the trade commissioners who are posted outside Pakistan. So we created this WhatsApp group with a number of them from North America, from Europe, ताकि at least, and we added Shehzad from Pasha and PSCB and everyone, कि अगर कोई query आए industry से related, IT से related, या अगर यहाँ पर किसी company को कोई help चाहिए, let's say recently UK में किसी client का visa का कोई issue था, अपने पाकिस्तान आना था, so we connected them and the TIO was very proactively supportive. So I think वो एक step है where those people really just needed an understanding of how they can help IT, and overall the TIOs have been very proactively supporting the industry. So I'll come to Harith, and Harith, given your extensive international experience, and then you worked in Pakistan for a number of years on some very big projects as well. So how would you rate the quality of Pakistani tech talent? And then maybe you can talk about the academy project and some of the steps that we can take. So, Arzish, there's a huge talent out there, right? Talent in terms of putting a lot of efforts
right? Talent in terms of putting a lot of extra hours, right? Because I think as a nation, we are very resilient and hardworking people, right? And even if our talent, they don't know the solution to it, they would Google around, they would find some books, they would get to the lists and get things resolved, right? So talent is amazing, right? Especially the youngsters who are coming in from the universities and the courses, all that, right? They have this whole end-to-end thought process, which is very good, right? So Pakistan, so when I was outside, my company used to outsource to different countries. Pakistan was one of them, right, and then some of the neighboring countries also. And I've always found that पाकिस्तान में जो टैलेंट है ना, उनका जो फोकस है टुवर्ड्स रिजॉल्विंग अ प्रॉब्लम, राइट, दे हैव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, राइट, दे वुड फाइंड अ वे। वो हम कहते हैं ना कोई जुगाड़ निकाल के सोल्यूशन जरूर निकाल लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्लस, राइट। what we need actually, as I mentioned before, is a little bit of polishing this talent, ठीक है। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है ना, हम because of so many bad environment impact against the brand name or brand Pakistan and all that, हम थोड़ा सा अंडरमाइन भी करते हैं अपने आप को, राइट। और उसकी वजह से हमारी जो रिसोर्सेज हैं, राइट, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, मतलब बात करेंगे तो पैसे सही नहीं मांगेंगे, या बहुत ज्यादा कम पैसों के अंदर जो है एक प्रोजेक्ट को करने की कोशिश करेंगे, राइट। एंड देन दिस कम्स विद द इकोनॉमिक कंडीशन एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। सो टैलेंट बहुत अच्छा है, अमेजिंग टैलेंट, बट देन अगेन वी रियली नीड टू रन फोकस प्रोग्राम्स, राइट। दीज ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज कमिंग इन, जिनका करिकुलम जो है वो 10-15 साल पहले डिसाइड हुआ था, we can't rely on that, we can't produce talent. हमें प्रॉब्लम क्या होती है, हम ऑनबोर्ड करते हैं किसी रिसोर्स को, हमें 3 से 6 महीने लगते हैं उसको ट्रेन करने में कि वो अप टू द मार्क हो फॉर द इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट, राइट। एंड दिस इज वेयर द गैप इज, अपार्ट फ्रॉम द अदर गैप्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मुजीब ने कहा कि ट्रेनिंग के लिए आना चाहते हैं, नहीं आ पाते हैं, वीजास के इशू है। जनवरी वी डिड अ साउथ एशियन नेटवर्क ऑपरेटर्स ग्रुप कॉन्फ्रेंस, तो उसमें भी यही हुआ कि पीएचडी लेवल के लोग हैं, वहां से ऑनलाइन वीजा अप्लाई किया हुआ है, फिर भी जो है वो ब्लॉक हो रहा है। और ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन शुडंट बी जस्ट अ वेब फॉर्म फिल्ड, राइट, एंड टू एंड फिर पूरा होना चाहिए। तो काफी सारे एरियाज हैं इम्प्रूवमेंट के, बट वी नीड टू फॉर्मुलेट लॉट ऑफ अकेडमीज। आई थिंक आई विल बिल्ड अपॉन व्हाट फैसल हैज सेड, एंड दिस हैज बीन इन डिस्कशन विद मिनिस्टर साहब आल्सो प्रीवियसली। ही आल्सो वांटेड टू फॉर्मुलेट अ बॉडी जो कि क्यूरिकुलम ओवरसाइट करे, ठीक है, और अलाइन करे उसको विद द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट। ये नहीं है कि अगर हमने कोबॉल या सी लैंग्वेज जो है वो पढ़ानी है तो बस हम वही पढ़ा रहे हैं। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? अगर कहीं पे अब पीएचपी की रिक्वायरमेंट नहीं रही है और वो रिप्लेस हो गई है पाइथन से, ठीक है, तो हमें एक साथ 50 बूट कैंप शुरू कर देने चाहिए पाकिस्तान के 4-5 प्रोविंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के, ठीक है। सो वेरी फोकस, ठीक है, टैलेंट की कमी नहीं है, थोड़ी सी पॉलिशिंग चाहिए, थोड़ा सा जो है प्राइवेट सेक्टर को इनेबल करे गवर्नमेंट, ठीक है। देखें, प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज के लिए गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, ठीक है, और वो फिर एक एक्सक्यूज और कंप्लेन का साइकिल शुरू हो जाता है, ठीक है। मेरा अपना ख्याल ये है कि थोड़ा सा लेवरेज दें प्राइवेट सेक्टर को, थोड़ा सा लेवरेज दें उन यूनिवर्सिटीज को जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर चल रही हैं, ठीक है, वहां पे बूट कैंप शुरू कराएं। देखें, अगर आप इंडिया की मिसाल ले लें, ठीक है, इंडिया के अंदर लोकल इंडस्ट्री, ठीक है, किसी बाहर से कंपनी ने आके डेवलप नहीं की, लोकल थे उनके बिग ग्रुप्स, और उन्होंने पहले स्टार्ट किया लोकली, उनको लेवरेज दिया गया, टैक्स हॉलीडेज दी गई, ठीक है, और फिर उन्होंने जाके अपने फ्रंट ऑफिसेस खोले, और वही कंपनीज आज बेस्ट टॉप 10 कंसल्टिंग कंपनीज के अंदर आती हैं, इन्फोसिस, टाटा, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। अब बात यह है कि मैं तो कहता आप कितना टैक्स जो है वो इस वक्त आप कलेक्ट कर लेते हैं आईटी कंपनी से, ठीक है। आप उनको एक लेवरेज दें, आप उनको कहें कि यार ये अगर आपसे हम 11% 17% टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, एक तो हार्मनी नहीं है टैक्सेशन के अंदर। कैपिटल में आप हैं तो आपने 5% देना है, अगर आप मेरा ख्याल है सिंध के अंदर हैं तो शायद 8% या 11% है, वो इवेंचुअली 16 या 18% हो जाता है, ठीक है। सो लेवरेज दें, उनसे कहें यार आप ये टैक्स जो है ना री इन्वेस्ट इन द रिसर्च फील्ड,
री-इन्वेस्ट इन एजुकेटिंग योर टैलेंट, ठीक है। और आप प्रूफ करें, उसका एक मैकेनिज्म बनाएं, उसका फ्रेमवर्क बनाएं, ताकि कोई टैक्स लेके जो है वो जेब में ना रखे अपने। लेट देम री इन्वेस्ट दिस टैक्स, ठीक है। और उसके बाद आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा ये फ्लरिश करेगा टैलेंट हमारा, ठीक है। वो पैसा जो इस वक्त मुख्तलिफ तरीकों से बचाने की कोशिश की जाती है अंडर द डिफरेंट टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से, वो री इन्वेस्ट होगा टैलेंट के ऊपर। टैलेंट के ऊपर री इन्वेस्ट करना मेरे फायदे में है एज अ कंपनी, बिकॉज आई गेट रेवेन्यू आउट ऑफ इट, एंड इफ ऑन टॉप ऑफ इट गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट एंड लेवरेज, ठीक है, या मुझे कोई हॉलीडे दे या मुझे कोई इंसेंटिवाइज करे उसके लिए, so I think it will really help boost this economy. Thank you, Haris. बड़े अच्छा आपने point highlight किया, and just to add, there are examples of this, like जो US में हम गए February में, so there's things like Lambda School and Hack Reactor, camps हैं 6 महीने के 12 महीने के, जहाँ पर कोई भी जाए जो इवन नॉन टेक की भी, और वो बाद में जॉब ले लेता है. So I think this way, even if the government can just play a facilitator's role, and private sector can come up with the curriculum, right? तो अगर गोल ये है कि यार इस बंदे को $1000 पे $1500 पे हायर कराना, तो वो खुद ही फिगर आउट कर लेंगे कि यार क्या पढ़ाएं कि ये बाद में हायर, राइट? बिकॉज द डिमांड विल डिफाइन द स्किल्स एज वेल. तो इसी से फैसल साहब से I'll ask 2 questions. The first one would be shorter. So number one is, in your opinion, what role do you think the private sector can play for the IT industry? Just as adding on to Haris's point. Certainly, IT industry role है ही प्राइवेट सेक्टर का. गवर्नमेंट शुड बी फैसिलिटेटर, और उसमें हर्डल्स ना क्रिएट करें. इंस्टेड ऑफ दैट, जहाँ जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे मैंने अर्लियर बात की थी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द करिकुला, उसके ऊपर गवर्नमेंट कैन सर्टेनली टेक प्राइवेट सेक्टर एजुकेशनलिस्ट ऑन बोर्ड. और मेरे ख्याल में बिल्कुल सही बात है कि अगर दुनिया में कहीं कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है तो गवर्नमेंट कह सकती है कि जनाब आप इस चीज़ के डिप्लोमा शॉर्ट कोर्सेज शुरू करते हैं. सो इन फैक्ट मेरे ख्याल में मुजीब ऑल्सो सजेस्टेड दैट, एंड आई हैव बीन हियरिंग इट फ्रॉम द आईटी जायंट्स इन पाकिस्तान कि भैया आपको अगर आईटी सेंटर्स भी, सिटीज भी कायम करने, तो देयर इज नो नीड कि गवर्नमेंट अपने बिलियंस ऑफ बिलियंस वहाँ के ऊपर एंगेज करें. इंस्टेड ऑफ दैट प्राइवेट सेक्टर कैन कम अप, और देयर आर सेवरल वेज कि जहाँ से आप कर सकते हैं, एंड गवर्नमेंट नीड्स टू. मेरे ख्याल में वी हैव नो ऑप्शन but to create major declare and create Karachi, Lahore, or even Islamabad and other cities as IT export centers and IT related cities. But we need to provide them proper infrastructure for that. This is the job of the government. Okay, provide them infrastructure. You can sell it to the IT exporters, IT developers. There could be several rates. आपका जो return of investment है government का, वो it would be much higher and higher. तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट कर सकती है बहुत सारी चीजें जो हैं इसमें, and government should do. बिल्कुल. एंड जस्ट टू ऐड, तो हमारे एक दोस्त हैं हंडोरस से, आई डोंट नो मुझीब नोज एज वेल. सो यूसुफ अमदानी इज अ पाकिस्तानी, इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन साउथ अमेरिका, एंड उन्होंने जो आईटी पार्क्स हैं हंडोरस के, मेक्सिको का, आई थिंक साउथ अमेरिका में काफी ज्यादा उन्होंने बनाए, एंड ही इज वन ऑफ द पीपल हु आर रेडी टू इन्वेस्ट एंड मेक द पार्क इन पाकिस्तान on the model, I think, which is being suggested by the players, कि जिसमें गवर्नमेंट सिर्फ एक रोल प्ले करे और इंडस्ट्री जो है या कोई प्राइवेट प्लेयर वो खुद सारा कुछ क्रिएट करे और फैसिलिटेट करे. हमें कनेक्ट करें उनसे अर्जिश, मेरे ख्याल में we'll take it from here, and why not? मैं I would just like to add, फैसल साहब, हम ये पाक टेक यूएस समिट में जब हम अर्जिश ने, इजाद लैब्स ने ये करवाया था, मेरा ख्याल है कि 100+ वहाँ पे सिलिकॉन वैली से लोग आए हुए थे. मेजर पाकिस्तान का 60-70 कम से कम ऐसे लोग होंगे जो कि पाकिस्तानी थे, सेटल्ड इन यूएस, ठीक है, और अपनी अपनी कंपनीज रन कर रहे हैं. $multi-million कंपनीज हैं उनकी, ठीक है. नॉट अ सिंगल ऑफ देम, मेरा ख्याल है कि 20-25 से तो मैं ही मिला हूँगा. वी वर इन अ मीटिंग spree and Arzish was enabling that. Not a single one has said कि नहीं यार मुझे पाकिस्तान में काम नहीं देना. The only thing is that यार पाकिस्तान के अंदर ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का थोड़ा सा इशू है, उसको कैसे एड्रेस करोगे, रिसोर्सेज जो हैं उनको अप टू द मार्क ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करोगे, एंड दैट्स अबाउट इट.
These two questions, right? So अगर आप उस डायस्पोरा को देख लें, 50-60 लोगों को जो $multi-million कंपनीज चला रहे हैं अपनी, मैं समझता हूँ कि 40-50 लोगों का काम जो है ना, सिंगल वो एक कंपनी कैपेबल है आउटसोर्स करने के, ठीक है? So there needs to be somebody from the government also who needs to go meet, sit, have long discussions. जैसे अभी मुजीब कह रहे थे ना कि उसका प्रेसिडेंट जो है वो इनेबल करने के लिए वहां पे मिल रहा है लोगों से और मल्टीनेशनल कंपनी से और कह रहा है भाई मेरे मुल्क के अंदर काम लेके आओ, ठीक है? सो मेरा ख्याल है कि बहुत ही फोकस्ड अप्रोच इसमें चाहिए और फ्रॉम टॉप टू कॉर्पोरेट सेक्टर ऑफ कोर्स। देखिए जब गवर्नमेंट जाती है तो गवर्नमेंट के जो हाई ऑफिशियल्स जाते हैं वो एक तरह से सॉवरेन गारंटी एक्ट करते हैं किसी भी बात के लिए, ठीक है? सो उनका जो कहना होता है या उनका जो कमिटमेंट्स होती हैं वो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। बट टू कम टू दैट पॉइंट, ये कनेक्टिविटी बिल्कुल होनी चाहिए और आई थिंक people like Arzish are doing it. Pasha is trying to do it for a very long time. और I think over the period हम इसमें काफी एडवांस लेवल पे आ गए हैं, बस थोड़ी सी गवर्नमेंट की सपोर्ट और चाहिए तो आई थिंक we would touch the sky. मेरे ख्याल में यू गाइस नो बेटर देन मी, लेकिन पिछले 2-3 साल में बहरहाल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर एक तो ये बात होना बहुत शुरू हुई है और कमेटीज वगैरह बन के उसके ऊपर कुछ काम हुए हैं, लेकिन अगेन हमें इसको बिल्कुल लेट मी गो विद पाकिस्तान फेवरेट जार्गन, चंगी बुनियादों के ऊपर करने की जरूरत है इंस्टेड ऑफ इन अ ब्यूरोक्रेटिक मैनर। Secondly, what I wanted to say when Haris mentioned that taxation का मसला है, I was wondering ऐसे being a political worker basically कि 23% of my country's GDP comes from agriculture, yet less than 1% in the national tax pool comes from agriculture. अब तो हम IT का नाम ही ज़राअत वराअत रखें, क्या करें? ये 2020 में हमें ये समझाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। अगेन people who are it's a Pakistan's domestic issue, but it is an issue. 18th Amendment के too many fountain heads कि आप कहाँ जाकर किस-किस के साथ डील करेंगे। तो मिसाल के तौर के ऊपर when you ask me कि what should be the mid term goal, mid term था पहले सोचा था, लेकिन कोविड से अगेन अब तो ये इमीडिएट है कि भाई आपने नेशनल जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसका प्लेटफॉर्म देना है। मैं कराची में बैठा हूँ, सिंध में टेस्टिंग हमने बहुत कर ली कोविड की, ओके फाइन, बट मेरे पास एक नंबर नहीं है कि मैं नंबर उठाऊं और कॉल करूं और मुझे बता दिया जाए कि मैं नाजमाबाद में रहता हूं तो कौन से हॉस्पिटल नियरेस्ट होगा जहां पर कोविड बेड्स हैं, वेंटिलेटर अवेलेबल है या नहीं है। वी शुड हैव डन दैट 4 महीने पहले ही हो जाना था। कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, प्लेटफॉर्म बनने थे, बना भी है इस्लामाबाद में NITB कभी मैंने, बट अगेन क्योंकि आपके पास सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं है, आपके पास इतने सारे फाउंटेन हेड्स बैठे हुए हैं कि वहाँ जो डाटा शेयरिंग जिन मायनों में होनी चाहिए वो ही नहीं हो पा रही। अभी हमने एहसास प्रोग्राम के नाम पे बिलियंस एंड बिलियंस वी हैव स्पेंट, प्रोविंसेस खामोश रहे, बट अगेन क्या मुझे लोगों को कोविड में एक्सपोज करने की जरूरत थी या नहीं थी? दिस इज द क्वेश्चन नीड्स टू बी आस्क्ड। और इसका आंसर भी IT इंडस्ट्री की तरफ से आएगा कि जो गवर्नमेंट को सजेस्ट किया जाए कि भाई आप ये काम कर सकते हैं, आप इनेबल करें, इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाएं। जो RS G2G वाली बात कर रहे थे, ही नोज देयर वर कंपनीज के वो दे अप्रोच मी कि भाई G2G नहीं भी करना, आप हमें सॉवरेन गारंटी दे दें, हम उसकी बुनियाद के ऊपर $100 मिलियन, $125 मिलियन जो है फला जाकर आकर करने के लिए तैयार हैं। बट नहीं हुआ, होना चाहिए। एज अ पॉलिटिकल वर्कर आई एम एन ऑप्टिमिस्ट कि करेंगे जी, मुल्क के लिए करना, अपने लोगों के लिए करना, इंशाल्लाह ताला करेंगे जी। एक अगर मैं हारिस के पॉइंट में एडिशन करता चलो, आई नो हम थोड़ा सा वक्त से ऊपर जा रहे हैं, तो एक तो ये कि एक डिस्कशन एक मूवमेंट पे आई थी कि यार IT का एक एम्बेसडर कोई रिप्रेजेंटेटिव लगा दें मिनिस्ट्री ऑफ IT का सिलिकॉन वैली। इट्स आई थिंक टेक्निकली वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में आके। तो अगर सिर्फ ये करें कि जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जा रहा है लॉस एंजलिस में या जो कॉन्सल जनरल जा रहे हैं, हम कोशिश कर लें कि वो कोई ऐसे हों जो ज़्यादा टेक सेवी हैं, जो कि करंटली हैं। तो करंटली जो शोएब वहाँ डिप्टी कॉन्सल जनरल है,
वो बहुत सपोर्टिव है, अमेरिका से ही पढ़ा हुआ है, तो शायद वो ज़्यादा समझता है टेक्नोलॉजी को। तो अगर कोई रिकमेंडेशन फॉरेन मिनिस्ट्री को जाए कि यार ये मार्केट इंपॉर्टेंट है और यहाँ जो भी बंदा प्लेस करने है आईटी मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन से कर लें, तो स्पेसिफिकली ऐसा बंदा कर लें जो यहाँ तो अमेरिका से पढ़ा है या आईटी को समझता है, तो वो एक ज़्यादा फास्ट सोल्यूशन होगा टू हैव समवन इन सिलिकॉन वैली हु रिप्रेजेंट्स द आईटी इंडस्ट्री एज वेल, क्योंकि वहाँ पर आई थिंक मतलब वहाँ पर कॉटन वगैरह तो नहीं बिकनी सिलिकॉन वैली में, तो आईटी वाले बंदे के ज़्यादा फायदा है। और इससे ही फैसल साहब एक जो मैं और आपसे सवाल करूंगा और आखिरी सवाल आपसे कि जो काफी ज्यादा एज एन इंडस्ट्री आउट मतलब रिप्रेजेंटेटिव, तो मुझे काफी नजर आ रहा है कि देर आर वे टू मेनी champions of the industry, maybe in the government as well. So this and I've been raising this question in all these different webinars जहाँ पर लोग आए थे कि so there's the Ministry of IT, then there is obviously NITB which has their mandate, then there is Digital Pakistan जिसका आजकल बहुत discussion भी हो रही है, then there are provincial bodies, तो KPITB है, PITB है, और बहुत जगह पे सबको ये नजर आता है कि शायद इदारे जो हैं वो मिलके काम नहीं कर रहे, शायद कहीं कंपटीशन चल रहा है, और हमें ये लगता है एज एन इंडस्ट्री कि कोलैबोरेटिव अप्रोच हमेशा ज़्यादा अच्छी रहती है कि अगर ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से बल्कि आपस में भी कोई कोलैबोरेशन हो कि ओवरलैप ना हो। तो इसमें आपको क्या लगता है कि व्हाट रोल कैन द मिनिस्ट्री प्ले मूविंग फॉरवर्ड, because obviously the ministry is the key organization representing IT, right? To bring everyone together, to bring all the stakeholders together. Unfortunately, Arzish, ideally, everything should come under Ministry of IT platform, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो पहली बात का तो जवाब ये है कि आईटी मिनिस्ट्री ने खुद नहीं अपने आप को बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया है। Unfortunately, people superior to Minister IT, they thought of creating more and more fountainheads. उसका फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, मेरे ख्याल में 2-3 साल होने को आ रहे हैं। इट कैन ऑलवेज बी इवैल्यूएटेड। कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन ठीक है, होना चाहिए, बट एक रूल्स ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त बने हुए हैं, उनके तहत ही चीजें चलनी चाहिए। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि टेकअप किए जा सकते हैं, किए भी होंगे NITB, बट अगर पीस ऑफ लेजिस्लेशन अगर कोई आ रहा है तो वो उसने पार्लियामेंट में जाना है। पार्लियामेंट से पहले आपके पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्ट्री में मौजूद हैं, तो दैट वुड हैव बीन अ फार बेटर अप्रोच। आपको अगर कोई लेजिस्लेशन अपने लिए करानी है, या डिजिटल पाकिस्तान का भी है, बहुत अच्छा है कि मुल्क के बाहर से लोग आए और पाकिस्तान में अपना फेथ बताएं फ्यूचर के साथ, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे रूल्स ऑफ बिजनेस सजेस्ट कि मिनिस्ट्री इज द अल्टीमेट अथॉरिटी इन दैट। मेरे ख्याल में हमें ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी। मिसाल के तौर के ऊपर वी आर एक्सपेक्टिंग कि मुल्क के कहीं कोरिया से, कहीं सिंगापुर से, कहीं सिलिकॉन वैली से लोग अप्रोच करेंगे। नाउ पीपल माइट बी कंफ्यूज्ड कि मैंने अप्रोच किसको करना है पाकिस्तान में, मतलब आर देयर टू मैनी कॉक्स एंड आर दे बीइंग हेल्पफुल और व्हाट। तो मेरे ख्याल में ये चीज है, इसको दुरुस्त होने की जरूरत है इन वन वे or other. Government has all the authority to change rules of business. Parliament के through आप करवा लें and abolish the Ministry of IT and go with certain platform which you have created. लेकिन there has to be एक आदमी जो है वो होना चाहिए कि जिसकी बात जो है वो हतमी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में वो नहीं है। सर फुली सपोर्ट, couldn't agree more। और वो आई थिंक जो आपने जिस तरह बात की, that entire framework is in the ministry. There is absolutely no way that any other framework can get things done, and that's why we see, pardon my with due apologies, that's why we see this absolute paralysis of action। और वो आपने कुक्स की बात की और हमने रख भी सारे पेस्ट्री शेफ लिए हैं। आप अगर कोई एक फूड शेफ रख लेते, एक कोई पाकिस्तानी कुजीन, एक कोई ओरिएंटल, तो शायद फिर भी कुछ बन जाता। अब वो सब पेस्ट्री शेफ हैं और वो जब तक कोई अपनी मर्जी की पेस्ट्री निकलेगी नहीं उस वक्त तक गेम कुछ बनती नजर नहीं आ रही। बट कंप्लीटली एग्रीड विद यू एंड फुली सपोर्ट यू ऑन दैट। मुझीब इसी से मेरा अगला सवाल आपसे ही होगा कि आप पाशा को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाउ कैन obviously Faisal साहब is there now, but how can the government तो number one is we talk about the objectives, क्या ये 3 चीजें हैं जो हम recommend करते हैं,
Other than that, how can the government work with you, work with Pasha, work with the industry in a more collaborative way? So, So, Arzish, to be honest, that collaboration is already happening. हमारी आईटी की टास्क फोर्स है, उसमें पाशा की रिप्रेजेंटेशन है. हमारी पीसेप के बोर्ड में जितने फ्रेमवर्क्स हैं उनमें पाशा की रिप्रेजेंटेशन है, और ये मुद्दे हम उन सब पे उठाते हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सेड देयर. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की कल हमारी डेवलपमेंट फंडिंग पे मीटिंग थी. एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड है उसके साथ भी हम. The collaboration is not an issue. The issue is what happens after that, which is nothing basically. So I think we don't want it. We are already collaborating. Faisal bhai already made the point around the unity. There has to be one neck to choke. Na? When you have 5 different necks to choke, everybody has their own agenda. मुर्गी एक है, उसको आप कितने तरीकों से हलाल करेंगे? तो वो कोलैबोरेशन का इशू नहीं है मेरे ख्याल में. फ्रैंकली स्पीकिंग, एवरीबडी इज बीन वेरी. द सेक्रेटरी आईटी स्पेशली आई वांट टू कमेंड हैज बीन सुपर अवेलेबल. जुनेद इनाम साहब, मेंबर आईटी, ही इज मेड श्योर ही इन्वॉल्व्स पाशा एंड द इंडस्ट्री इन एवरी डिफरेंट इनिशिएटिव्स. अभी डेटा प्रोटेक्शन पे बात हो रही थी, उन्होंने हमें रीच आउट किया, हमें टाइम दिया. ही वाज अवेलेबल. पीटीए का मैंने जिक्र किया, उसमें जो लोग हैं उन्होंने, इट्स नॉट अ इट्स अ इशू पॉलिसी मेकिंग का है जो इन सब लोगों से ऊपर की बात है. इशू इस लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन में वो लोग भी जितना कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं. जब तक आप स्ट्रैटेजी लेवल पे चीजें फिक्स नहीं करेंगे उस वक्त तक ये सारा इज बेसिक, वो लीन में हम कहते हैं दिस इज वेस्टेज. वो रीवर्क हो रहा है, हम उस पर बैठ रहे हैं. हमने रिकमेंड बजट में हमने कहा गया कि जी आप 3 दिन में रिकमेंडेशंस दें, हम इंश्योर करेंगे कि शामिल हैं. हमने बैठ के सबसे इंडस्ट्री से मिलके एक सेशन किया ऑनलाइन. बजट की हमने 4 रिकमेंडेशंस दी. Not a single recommendation. They didn't even come close to implementing it. So, the collaboration is there, but nothing happens after that. बिल्कुल नहीं. बड़ी अच्छा. मुझीब, मैं ये लेके आया था डॉक्यूमेंट अपने साथ ही. आपको याद होगा आईटी की सब कमेटी ने एक 8 पेज डॉक्यूमेंट रिकमेंडेशन का बनाया है. ठीक है, ये मैं कोशिश करूंगा कि फैसल साहब को किसी तरह जो है ना ये पहुंच जाए. ये 1 साल पहले डॉक्यूमेंट फाइनल हुआ था, और मैं आपको इसके हेड्स बता दूं सिर्फ. ये ई ऑफिस, गवर्नमेंट आईटी रिस्ट्रक्चरिंग, ई गवर्नमेंट बजट एलोकेशन, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, इंडस्ट्री क्वालिटी एंड कैपेसिटी एनहांसमेंट, टेक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट. इसमें ये मेरा ख्याल है 13 हेड्स हैं, 19 हेड्स हैं. इवन टू द मैटर के पेपरा रूल्स में क्या अमेंडमेंट करनी है, टू द पॉइंट जो मुझीब ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया था कि पाकिस्तान लोकल इतना टैलेंट है, लोकल सॉफ्टवेयर हैं, सारी चीजें हैं, आप सपोर्ट करें. ये भी रिकमेंड किया गया था कि पाकिस्तान लोकल फर्स्ट, पाकिस्तान फर्स्ट, मेक इन पाकिस्तान फर्स्ट. राइट. तो ये 19 हेड्स का डॉक्यूमेंट है जो कि एक्सटेंसिव एक्सरसाइज हुई है. ठीक है, टास्क फोर्स की बेतहाशा मीटिंग्स इसके ऊपर हुई हैं, और टास्क फोर्स में जो लोग हैं उनके अपनी जो टीम्स थी उन्होंने एक्सटेंसिव एक्सरसाइज की. सर ये डॉक्यूमेंट मुझे नहीं पता किस फाइल के नीचे जो है ना वो चला गया है. इसमें वो सारी बातें लिखी हुई हैं जो हम रिपीटेडली फोरम्स के ऊपर कह रहे हैं. और अगर ये चीजें जो हैं वो एक सेक्शन भी इसमें से एड्रेस हो जाए ना, तो वो मेरा ख्याल है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फ्लरिश कर सकती है. आई थिंक ये मैं सिर्फ बता दूं, एक तो मुझीब सेक्रेटरी आईटी की तारीफ कर रहे थे, और वो बहुत अच्छे ऑफिसर हैं. इतने अच्छे ऑफिसर हैं कि मेरे जैसी बहुत छोटी सी मिनिस्ट्री मेरे पास प्रोविंस में थी, 4.25 साल मेरे साथ सेक्रेटरी रहे थे, क्योंकि कोई और मिनिस्टर उनको अपने साथ रखने पे तैयार नहीं था. ये वाज अ फाइन फेलो, और बड़ी उनकी रिस्पेक्ट. सेकेंडली तो आप ये कह रहे थे कि ये हैं 19 पॉइंट्स. आप दीजिएगा, कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर एक के बाद एक शुरू करें. एंड क्या इसमें किया जा सकता है भाई, होना चाहिए. मेरे ख्याल से बहुत सारे पॉइंट्स तो आपने मुझे दिए नहीं, उसके बावजूद भी शायद मैंने हमारी बड़ी सिंक थी गुफ्तगू. बिल्कुल बिल्कुल. और फैसल भाई, मजे की बात यह है कि इनमें से 19 में से शायद 15 पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसमें कोई पैसे नहीं लगने. वो पॉलिसी लेवल चीजें हैं सिर्फ, जो आपने पॉलिसी लेवल पे ठीक करनी है. जिस तरह जो मैंने पाशा की 3 डिमांड्स थी, उनमें कोई ओनली द थर्ड वन, उसका खर्चा है तकरीबन $5 से $6 लाख. ठीक है,
That's the entire expense of that particular proposal. The first two are only policy things. Nothing else has to be. तो हम तो खर्चे, हम कोई सब्सिडी भी नहीं मांग रहे 2-3 अरब 20 अरब की. हम तो वो मिल सिर्फ जाती पॉलिसी लेवल वो मिल जाती है. मेरे ख्याल में चैंपियन ऑफ द कॉज इज मिसिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, तो वो मेरे ख्याल में इंडस्ट्री के साथ मिलके और मिनिस्ट्री को हम कुछ करते हैं ऐसा कि चैंपियंस क्रिएट करें. बिल्कुल नहीं, आई थिंक चैंपियन वाली बात पे हम पहुंचना चाह रहे थे इस सेशन के कंक्लूजन में भी. तो मैं बस मैं जानता हूँ 12 मिनट लेट हो गए एंड थैंक्स फॉर टेकिंग आउट द टाइम. बट आखिरी सवाल मैं हारिस से पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि शायद वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एंटिटीज हैं आईटी इंडस्ट्री में. तो हारिस, आप क्या समझते हैं कि जो इनक्यूबेटर्स का क्या रोल रहा है अभी तक, और क्योंकि आपने इनबॉक्स में बड़ी मेजर प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया, तो कैसे जो इनक्यूबेटर्स हैं वो लोकल इश्यूज को सॉल्व करने पे ज्यादा वर्किंग कर सकते हैं? अच्छा, यार सो लोकल इनक्यूबेटर्स का रोल. अच्छा यार, एक देखो, सो आई विल नॉट से समथिंग. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो गवर्नमेंट के इनक्यूबेटर्स है ना, वो और या जनरल जो काम हो रहा है सारा ग्रांट बेस हो रहा है. ठीक है, अब ग्रांट आती है, ग्रांट्स डाइल्यूट हो जाती है. ठीक है, आपने प्रोजेक्ट क्वालिफाई करने के लिए 3 इनक्यूबेटर्स क्रिएट किए, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, एंड 2 मोर आई थिंक एबटाबाद एंड फैसलाबाद, राइट. आपने 10-10, 12-12 लोग लिस्ट किए, ग्रांट दी उनको, एंड दैट्स. देखिए, ये अगेन आई कम बैक टू दिस 19 पॉइंट्स एजेंडा. इसके अंदर बड़ा क्लियरली हमने ये कहा था कि यार इन्वेस्टर को लेके आए, ठीक है, और ग्रांट्स ना दें, उसको कन्वर्ट कर दें लोन के अंदर और इंटरेस्ट फ्री लोन दें. ठीक है, और लेकिन कोई ओवरसाइट होनी चाहिए, कोई सुपरविजन होनी चाहिए. लोन होता है ना, तो लोन के ऊपर ये होता है कि लोग आते हैं और कहते हैं कि यार ठीक है, हमें 5 साल में, 3 साल में पैसा वापस करना है, एक ऑडिट कमेटी बैठी हुई है, हमें कोई ना कोई चीज डिलीवर करनी है. इंक्यूबेटर्स में लोग आते हैं, 200 कंपनी आती हैं, 10 उसमें से कुछ कर जाती हैं, 190 कहाँ जाती हैं, नोबडी नोस. वो ग्रांट डाइल्यूट हो जाती है. ठीक है, सो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंज थोड़ा सा चाहिए. प्राइवेट सेक्टर के कुछ इंक्यूबेटर्स हैं जो काम कर रहे हैं, मेंटरिंग डेफिनेटली हो रही है. रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्यूबेटर का. ठीक है, हमने देखा यूएस के अंदर इंक्यूबेटर्स लाइक ट्रिपल यूनिवर्सिटी एंड अदर. दुबई के अंदर एरिया 2071 बनाया था उन्होंने, कोई 5-6 साल मेरा ख्याल हो गए हैं, राइट. सो वो एरिया 2071, उन्होंने कहा 2071 को हमने टारगेट करके ना काम करना है. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बिल्डिंग ली. ठीक है, बिल्डिंग के अंदर उन्होंने रेगुलेटरी लैब बना दी, उसमें गवर्नमेंट के लॉ के 2 बंदे ला के रख दिए. ठीक है, फाइनेंस लैब बना दी, फाइनेंस के, और वहीं पे सारे स्टार्टअप्स बैठे. ठीक है, अब स्टार्टअप में अगर कोई काम करना है, लेट्स से पावर या एनर्जी सेक्टर के अंदर एक स्टार्टअप में काम करना है विच डायरेक्टली कोइंसाइड्स विद लेट्स से सम पॉलिसी इशू, तो वहीं पे जो है वो रेगुलेटरी लैब बैठी हुई है, वहीं पे फाइनेंस की लैब बैठी हुई है. ठीक है, वहीं पे इंडस्ट्री बैठी हुई है, वहीं पे एकेडमिया के जो है वो लोग उन्होंने बिठाए. ठीक है, सो मेरा ख्याल है कि फंडामेंटल एक चेंज इंक्यूबेटर में लाने की जो है वो जरूरत है. और अब तो पोस्ट कोविड एरा तो बहुत चेंज आ गया. आज हम ये सेशन कर रहे हैं, इस सेशन के लिए शायद प्रीवियसली अगर कभी होता तो हम एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसपे 2-3 करोड़ रुपए हम लगाते, लोग ट्रैवल करके आते, चाय पीते और चले जाते. बट अब तो और थोड़ा सा जो है वो चेंज हो गया है, और इस तरह के मेंटरिंग सेशंस किए जा सकते हैं. वर्चुअल इंक्यूबेटर्स भी हैं, बिजनेस प्लानिंग से लेके डिलीवरी तक की सारी हेल्प की जा सकती है. अगेन दिस गोज बैक टू द सेम थिंग जो मैं आपसे बात कर रहा था, एकेडमी, स्किल सेट इनहेंसमेंट, टैलेंट. वहीं पे ये सारे लोग आएंगे, वहीं पे लोग आएंगे, बताएंगे बिजनेस प्लान कैसे लिखना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आनी है, इंटरनेशनल लोगों से किस तरह करना है, पिचेस कैसे बनानी है अपनी. ठीक है, कंपनी बाहर कैसे रजिस्टर करनी है. मैं ईज ऑफ डूइंग की आप बात कर रहे थे, अभी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पे बनाने में 3 महीने लगते हैं. ठीक है, और वायोमिंग में या बाहर कहीं आप कराएं तो 3 दिन में कंपनी रजिस्टर हो जाती है यहाँ से बैठ के पाकिस्तान के अंदर, और यू कैन स्टार्ट वर्किंग एज ए यूएस एंटिटी, राइट. सो ये सारी चीजें हैं. सो इंक्यूबेटर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट प्लीज ग्रांट बेस से निकल के हमें प्रॉपर इन्वेस्टर, और बाहर से देखें, रिपैट्रिएशन ऑफ मनी एक बहुत बड़ा इशू है. ये शब्बर जैदी साहब थे, उनके साथ बैठ के भी काफी बात हुई. ठीक है, अब कोई आ रहा है बाहर से अगर इन्वेस्टमेंट करने,
और उसकी वैल्यूएशन हो गई, 1 मिलियन लगाया था 4 मिलियन की हो गई, अब वो 1 मिलियन से ज्यादा बाहर नहीं ले जा सकता। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। मेरा ख्याल है कि इंक्यूबेशन सेंटर्स में हमें थोड़ा सा ओपन अप करना चाहिए, और बाहर से एटलीस्ट जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उनकी जो कंपनीज हैं, दे शुड बी एबल टू इन्वेस्ट फ्रीली एंड रिपैट्रिएट सम मनी आउट ऑफ इट आल्सो। सो या, बस टू आंसर योर क्वेश्चन, स्टैम्प बेस से इसको प्रॉपर मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के अंदर लेके आए, तभी बेनिफिट आएगा, वरना जो टैलेंटेड लोग हैं उनको भी आप जाया करते हैं। बिल्कुल नहीं, बड़े बड़े अच्छे पॉइंट आपने रेज किए। इसी के साथ हम अब 17 मिनट ओवर आ गए अपने टाइम से, तो मैं बस चाहूंगा कि अगर सारे जो हैं वो कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स शेयर कर दें। आई नो वी डिस्कस्ड अ बंच ऑफ amazing things today, and I'm sure moving forward this will create a lot of results for the industry as well. So let's start with Faisal Saab, if you can share some concluding remarks. मेरे लिए तो टेक अवे यही है जो मुजीब साहब ने और हारिस ने और आपने बयान की हैं चीज़ें जो हिंड्रेंसेस हैं, और मेरे ख्याल में यहाँ से किया यही जा सकता है एज सेट के जो पिछले साल ये बता रहे थे कि कुछ पॉइंट्स दिए गए थे टास्क फोर्स के थे, उन पे नहीं हुआ, एंड लव टू सिट विद पाशा और समवन फ्रॉम पाशा, ताकि आपका इंडस्ट्री का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या होना चाहिए, नहीं हुआ उसके क्या रीजन थे, टैक्स के जो इश्यूज हैं, यूएसएफ का मॉडल टेलीकॉम की तरफ से सामने है आपके, आप हो सकता है आईटी में क्यों नहीं हो सकता, जो हारिस सजेस्ट कर रहे थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे ख्याल में जो आज ज़ेर बहस आई, एंड वुड लव टू वर्क अपॉन देम वंस आई एम देयर। सो लेट्स होप कि हम सब मिलकर कुछ पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री में की बेहतरी के लिए कुछ काम कर सकें। Inshallah, inshallah. And again, thank you so much for your time. Over to you, Mujeeb. Thank you, Arzish. First of all, thank you for inviting us and giving us a platform to discuss. As Faisal Saab mentioned, I think the intent sabki wohi hai that we, and also just, I mean, all of that being said, the industry is still growing. Last quarter growth was about 17, 18%. The fastest growing industry literally in Pakistan. ठीक है, right now. तो इसलिए दैट्स वाई थोड़ा सा हम ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं कि यार अभी अगर इन सब मुद्दों के साथ अगर 17-18% है, तो इफ वी आर एबल टू फिक्स इट, तो इमेजिन व्हाट कैन बी पॉसिबल। सो वी commit to providing whatever support Faisal Saab needs in executing some of these things. And as I said before, I mean, our stance, we're not changing the goalpost. The document that Haris spoke about has the same things that I've just mentioned. The export, the marketing, the special economic zone or technology zone, and the Make in Pakistan initiative. And then there are initiatives, the other things that sort of detail it out. As long as we can continue to work together, I think, as Faisal Saab has said, we would love to continue that partnership. Absolutely, absolutely. And thank you so much for the role you're playing, especially in voicing all these concerns of the industry. Over to you, Haris. Again, thank you, Arzish, for enabling this session and doing a great work. And I think the last 1-2 years, I've seen your work. It's amazing, and it's really I'm happy to see youngsters like you coming in and contributing so much, and which is creating actually a real impact. मैं लास्ट पॉजिटिव बात मेरे साइड से ये है कि देखें, दुनिया जा रही है इस वक्त रिमोट फर्स्ट पे, ठीक है, कॉस्ट कटिंग, ऑपेक्स मेजर्स एवरीवेयर, ठीक है। दिस इज द टाइम, ये ट्रेन हमने मिस नहीं करनी है, ठीक है। ये ट्रेन हमने मिस कर दी तो फिर आई डोंट नो, ठीक है। सो रिमोट फर्स्ट के ऊपर वी हैव सच हैवी पॉपुलेशन, वी हैव व्हाट 39-40% अर्बन माइग्रेशन स्टिल हो रही है, सो इनेबल करें सिटीज को, टीयर 2 सिटीज को, टीयर 3 सिटीज को। कहीं कहीं बहुत अमेजिंग काम भी हो रहा है, सीन एबटाबाद में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। रिमोट फर्स्ट के लिए अपने लोगों को हमें तैयार करना है। उसके लिए साहब जो हेल्प आपको चाहिए, ठीक है, क्यूरिकुलम के पर्सपेक्टिव से कंपनीज, फॉरेन कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स लाइक मुजीब हु हैव बीन एसोसिएटेड, दे हैव एक्सपोजर, ग्लोबल एक्सपोजर, बहुत सारा काम किया जा सकता है। एक बॉडी जरूर बनाइए जो क्यूरिकुलम को हैंडल करे और इंडस्ट्री के साथ और डायस्पोरा के साथ अलाइन हो, और वो चीजें पढ़ाएं शॉर्ट टर्म के अंदर जिनकी एक्चुअली हम प्लेसमेंट्स क्विकली आउटसाइड कर सकते हैं।
So remote first should be our target. That's it. Thank you, Arzish. थैंक यू सो मच हारिस थैंक यू आपने बड़ा एक अच्छा गोल जो है वो शेयर कर दिया आई थिंक सबके लिए बिकॉज डेफिनेटली कोविड में दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट एंड यू नो बाउंड्रीज शायद सारी खत्म हो गई हैं अब मूव नहीं करना पड़ता अब शायद मेजर कंपनीज भी जो है वो इसे मतलब नॉर्मल समझते हैं कि यार हाँ रिमोट बंदा है पाकिस्तान में बैठा है कहीं भी बैठा है हम इंगेज करें और इसी के साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड डूइंग दिस डिस्कशन and for the work that you're doing, not just for your organizations, but also for the industry and for the country. I think ये इंडस्ट्री कुछ ऐसी कि इसका बड़ा रिपल इफेक्ट होता है कि वो यू नो दो लोग फ्रीलांसिंग सीख लें वो चार और को सिखा देते हैं बड़े लोगों के लाइवलीहुड बन जाता है तो इसका जो इम्पैक्ट है दैट वी विल सी आई थिंक इन द नेक्स्ट 10-20 years on the economy if it is done right and I think we have the right players in the room to inshallah make this happen. Thank you. Thank you, Azam. Thank you so much. Thank you so much.